ऑसिलेशंस बेटा, और अपन इसको SHM बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, so before we try to go for the oscillations, let us try to define a term called as periodic motion. What do you mean by a periodic motion? किसी को याद है? पीरियोडिक मतलब क्या? रेगुलर, जैसे रेगुलरली आप खाना खाना एक टाइम पे, रेगुलरली क्लास को आना एक टाइम पे, या रेगुलरली अर्थ सनराइज होना, ये पूरे पीरियोडिक मोशन जो रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम में चलते हैं उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। क्लियर है बेटा? So what is a periodic motion? A motion which repeats at the regular intervals of your time is called as of your regular, is known as of your periodic motion. जैसे अपन खाना खाते हैं 3 टाइम, एक रेगुलर टाइम होता है ना कि ये टाइम के अंदर अपन को खाना खा लेना है, या क्लास को आने का टाइमिंग मॉर्निंग इतने टाइम पे इतनी क्लास स्टार्ट होती है, एवरी मॉर्निंग वी नीड टू कम टू दिस क्लास, दैट इज एवरी डे यू आर डूइंग इट आउट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, isn't it? So anything which is repeated at the regular intervals of your time is called as of your periodic motion. ठीक है ना? I am writing the definition here. The motion that repeats, the motion that repeats itself at regular intervals of time. Regular intervals of time is called periodic motion. Is called periodic motion. Done better? Example. Rotation of Earth around the sun. The motion that repeats at regular intervals of your time is called as of your periodic motion. The best example is rotation of the Earth around your sun. Is the best example. ठीक है बेटा? So what is this one? The motion that repeats itself at regular intervals of your time is called periodic motion. Clear बेटा? Next slide. Oscillatory motion बोलो और vibratory motion बोलो, one and the same. Oscillatory motion और your vibratory motion. आईपी के लिए भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन निकलता है बेटा इसमें से, ठीक है? सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑसिलेटरी मोशन बेटा? ऑसिलेटरी मतलब क्या? ऑसिलेशन होना, सामने पीछे, क्लास जाऊं ना जाऊं, क्लास जाऊं ना जाऊं, isn't it? जैसे वाइब्रेटरी मोशन मतलब मान के चलो एक ब्लेड है, अपने अपने दांतों के बीच में रख के उसको छोटा सा पुश दे के छोड़ दिया, तो उसके ऊपर नीचे जिंग बोल के आवाज करके निकलते रहती है, दैट इज कॉल्ड एज ऑफ योर वाइब्रेटरी मोशन। जैसा एक मस्कीटो आपके ईयर के पास एक वॉइस करते हुए ऑसिलेट करते रहना, उसकी इज आल्सो कॉल्ड एज ऑफ व्हाट? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन बोलो, वाइब्रेटरी मोशन बोलो, इट इज वन एंड द सेम। द मोशन ऑफ एन बॉडी फिक्स्ड पॉइंट जो टू एंड फ्रो करते रहे ना, उसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। जैसे मान के चलो एक वुड ले लिया आपने, एक लकड़ी, और उसको पानी में डाल के एक छोटा सा पुश देके छोड़ दिया। अब अगर उसको छोटा सा पुश देके छोड़ दो, अब तो मालूम में लकड़ी जो है ना पानी में तैरती है, तो जैसे आपने पुश करा छोड़ दिया तो इट विल गो डाउन एंड कम अप, गो डाउन एंड कम अप, सो दैट इज कॉल्ड एज अ ऑसिलेटरी मोशन अबाउट योर फिक्स्ड पॉइंट। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग इज आल्सो एन ऑसिलेटरी मोशन पार्ट। आई होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट द डेफिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ऑसिलेटरी मोशन और व्हाट डू यू मीन बाय वाइब्रेटरी मोशन बेटा? द पीरियोडिक मोशन, the periodic motion of an object about a fixed point, to and fro, और मैं बोल सकता हूं अप एंड डाउन,
up and down is called oscillatory motion. Is called oscillatory motion. Clear, beta? So what do you mean by the oscillatory motion? There is a periodic motion. The periodic motion of an object about a fixed point, to and as well as of your fro, or we can say up and as well as of your down, is called oscillatory motion. Is called what? Oscillatory motion. Clear, beta? So you can say this to and fro motion, or we can say up and down motion. Up and down motion is called as of your oscillatory motion. Clear for everyone? एग्जाम्पल है किसी के पास? एग्जाम्पल सिंपल पेंडुलम, simple pendulum, or I can say loaded spring. Loaded spring. ये पूरे अपने क्या होते हैं बेसिकली? एक्सेप्ट oscillatory motion बोलिए, vibratory motion. Data. So what do you mean by oscillatory motion or vibratory motion? So what is an oscillator or vibratory motion, beta? The periodic motion of an object about a fixed point, which is to and fro or up and down, is called as what? Oscillatory motion. Example, simple pendulum, loaded spring, etc. These are all your oscillatory motion. ठीक है ना? यहाँ पर important point लिख लीजिए बेटा. This has been asked so many times in a competitive examination. Every oscillation must be periodic. Every oscillation must be periodic, but all periodic motions need not be oscillatory. Oscillatory हो सकता है, नहीं हो सकता है periodic, लेकिन every oscillatory motion must be your what? Periodic motion. This is a very important point. Every oscillation must be periodic. But all periodic motions, just a revolution of the earth around the sun, it is a periodic motion, but not an oscillatory motion. जैसे सीविंग मशीन, जैसे कपड़े सीने की मशीन रहती है ना, जो नीडल होती है नीचे ऊपर जाती है, इट इज a periodic motion but also an oscillatory motion. So that is the reason I'm telling that every oscillation must be a periodic. ये condition है, but every periodic motion need not be an oscillatory motion. Clear for everyone? Is that clear? Sure. Next one. इसी के अंदर, if displacement of the particle in oscillatory motion is expressed in terms of sine or cosine, functions, then its motion is said to be harmonic. Displacement of the particle in oscillatory motion is expressed in terms of what, beta? If displacement of a particle
in oscillatory motion is expressed in terms of maybe a sine ho, yeah, maybe a cosine function ho, isn't it? Then that such type of motions are called as what? Harmonic motions. Again, harmonic motions किसको बोलते हैं? Clear बेटा? If the displacement of the particle in oscillatory motion is expressed in terms of sine function या cos function, then वैसे वाले motion को हम लोग क्या बोलते हैं? Harmonic motion बोलते हैं. So I hope you have got the clarity about this one. So oscillation start करने से पहले अपन ने क्या किया? Periodic motion के बारे में बात करा. What do you mean by periodic motion? Done बेटा? Periodic motion मतलब क्या? The motion that repeats itself at the regular intervals of a time is called as periodic motion. Best example for that one is rotation. इसके बाद oscillatory motion बारे में बात कर रहे हैं. Oscillatory motion और vibratory motion एक ही होता है. The periodic motion of an object about a fixed point, which is to and fro or up and down, is called oscillatory motion. Example: simple pendulum. Isn't our loaded spring? These all of them are the examples of the simple harmonic motion. Clear बेटा? क्या क्या examples है इसके लिए? Simple pendulum is the best example. And loaded spring is also the best example. Simple pendulum मतलब ऐसा कुछ होता है बेटा. ऐसा एक बॉब होता है, ये fixed position होता है, it will go up like this, go down. So this oscillation is called as of your to and fro motion. इस position को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? Extreme position बोलते हैं. इस position को हम लोग कहाँ बोलते हैं बेटा? Mean position. ठीक है, जस्ट रफली याद रखो, हम लोग डिटेल में बाद में भी करेंगे उसके बारे में. ठीक है, so every oscillatory motion must be periodic motion, but all the periodic motions need not be what? An oscillatory motion. Clear है? अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आप साइन फंक्शन में और कॉस फंक्शन में रख रहे हो बेसिकली, देन वैसे वाले फंक्शन को और वैसे वाले मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मोनिक मोशन. इज इट क्लियर बेटा? चलो, let us try to enter into our topic, that is simple harmonic motion. Simple harmonic motion. Simple harmonic motion मतलब SHM. SHM होने के लिए कंडीशंस क्या क्या होते हैं बेटा? कोई भी पार्टिकल अगर आपको इक्वेशन दे दिया जाए, पूछे कि SHM है या कुछ और है, कौन सी टाइप ऑफ इक्वेशन है? पीरियोडिक है या मे बी ऑसिलेटरी है या मे बी सिंपल हार्मोनिक मोशन है? हाउ टू आइडेंटिफाई दैट वन? तो इसके लिए थोड़े कंडीशंस है बेटा, वो याद रख लो. पहले आप इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं. A particle is said to be SHM if its motion satisfy the following conditions. The following conditions. First of all, number 8. Must be oscillatory. Must be an oscillatory and periodic. ये वाला कंडीशन. और सेकंड वाला जो है ना, और it must be periodic. It must be periodic. और जब भी हम लोग उसको SHM बोल सकते हैं. टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए और it must be a periodic. और थर्ड वन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका जो एक्सेलरेशन होता है ना बेटा, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑपोजिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट. याद रख लीजिए, ठीक है ना? यानी आई एम राइटिंग हियर राइट नाउ, acceleration is mathematically acceleration is proportional to minus of your y. A is directly proportional to minus of y. Y क्या है यहाँ पर? Displacement. Y is what? Displacement. A is what? Acceleration. This is your proportionality. And negative sign indicates that it is an opposite direction to the displacement. ये हो गया for linear SHM. For linear
SHM. For angular SHM, मैं लिख रहा हूँ for angular SHM, बताइए कि भाई आपका सर्कुलर मोशन हो चुका है ना, तो एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं अपन, अल्फा से लिखते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू, इट इज प्रोपोर्शनल टू, याद है किसी को, दो भी एक ही तरह दिख रहे हैं ना, मैं थोड़ा डिफरेंस कर लेता हूँ उसको, हाँ ये हो गया ना अल्फा, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट थीटा, अल्फा इज योर angular acceleration, alpha is your angular acceleration and theta is your angular displacement. ठीक है, is that clear? तो लीनियर के लिए ये इज माइनस ऑफ वाई फॉर लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम, फॉर एंगुलर एसएचएम के लिए alpha will be directly proportional to minus of your theta. Alpha is your angular acceleration and theta is your angular displacement. Clear है बेटा सभी ध्यान तक? These are the conditions for the SHM. एक बार देख लीजिए जल्दी से, कुछ डाउट रहा था किसी को, प्लीज लेट मी नो. क्लियर बेटा? एग्जांपल्स बताइए एक बार. एग्जांपल्स ऑफ SHM. The best example जो आप लोग आईपी के लिए भी पढ़ते हो. What is the best example बेटा? Projection of uniform circular motion. Projection of uniform circular motion along diameter is SHM. Projection of uniform circular motion along diameter is SHM. This is one of the best example. ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले लीजिए. In absence of resistance of force beta, in the absence of resistance forces and for small amplitudes, simple pendulum and loaded springs are in SHM. ठीक है. So what are the best examples beta? Projection of uniform circular motion along the diameter is in SHM. और one more example is in the absence of resistance forces and for the small amplitudes. ये भी वर्ड याद रखना है बेटा आप लोग. Absence of resistive forces जैसे एयर फ्रिक्शन हो, विस्कोसिटी हो, ऐसे वाले चीजें ना हो, तो वैसे वाले सिचुएशंस में अपन बोल सकते हैं कि एक सिंपल पेंडुलम को ले लीजिए या आप एक लोडेड स्प्रिंग को बोल लीजिए, ये भी SHM बनाएंगे. क्योंकि ये दो चीजें ऐसे हैं कि थोड़ी देर के बाद ये अपने आप को रेस्ट पे आ जाते हैं बेसिकली.
जैसे पेंडुलम में आपने एक बार ऑसिलेशन दे दिया, छोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा थोड़ी देर के लिए, देन इट विल कम बैक, सो इट इज नॉट ए कांस्टेंट। तो वैसे वाले एसएचएम को हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशंस बोलते हैं, जिसका एम्पलीट्यूड चेंज ही ना हो और उस पर कोई रेसिस्टिव फोर्स लगा ही नहीं, उसको हम लोग अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस बोलते हैं। क्लियर है बेटा? आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस वन। एग्जांपल्स क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन का एग्जैक्ट टॉपिक पे, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। is what for me? SHM. Projection of uniform circular motion is SHM. ठीक है ना बेटा? अपन करेंगे क्या यहाँ पर, उसको देख लीजिए। कंसिडर ये सर्किल like this. और ये इसका डायमीटर, ठीक है बेटा? और ये हो गया इसका ऑरिजिन यहाँ पर, एंड ये हो गया इसका रेडियस, सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस से जो भी होगा दैट विल बी योर रेडियस। यहाँ पर अपने पास एक पार्टिकल है, मास m, एट टाइम व्हाट t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स के पास। थोड़ी देर के बाद ये पार्टिकल जो है ना ऐसा होते हुए यहाँ पर कहीं पर आ गए, रोटेट करते हुए, यानी यहाँ से यहाँ तक इसको रोटेट करने के लिए जो एंगल बनी थीटा है, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी लिखते हैं अपन। तो कितना टाइम लगेगा बेटा? कम टाइम t सेकेंड्स के पास आ गया, मान के चलो 0 से लेके t सेकेंड्स तक आ गया, ठीक है ना? अगर मैं इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना बेटा, और ये हो गया इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, और यहां से यहां तक इसका ये हो गया रेडियस। इस रेडियस को अपन क्या बोलते हैं बेटा? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। दिस y इज ओनली नोन एज व्हाट? एम्पलीट्यूड। दिस r इज इक्वल्स टू योर a। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो करना क्या है यहाँ पर? कंसीडर, लिख रहा हूं, कंसीडर a body revolving in uniform circular motion, in uniform circular motion with constant angular velocity, कितना? ओमेगा, ठीक है? then its projection moves along the diameter. d, यहां से अंदर पूरा अपन क्या बोलते हैं? इसका डायमीटर, चाहे ऐसा ले लो या चाहे आप ऐसा ले लो, ये पूरा डायमीटर, ठीक है ना? बोला क्या अपन ने? कंसीडर बॉडी इज रिवॉल्विंग इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इसकी कितनी है? ओमेगा। देन हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसका प्रोजेक्शन जो होगा ना, दैट विल मूव अलोंग द डायमीटर। इसका मतलब क्या होगा? कोई बताएगा? इसका प्रोजेक्शन मतलब, यहाँ पर ध्यान से सुना बेटा सर, एवरीवन, इसका प्रोजेक्शन मतलब ये जो वाला मैंने ब्लैक वाला पॉइंट लिखा ना, उसका एक ग्रीन पॉइंट यहाँ पर एग्जैक्टली उसका शैडो अज्यूम करिए, यानी जैसे जैसे ब्लैक स्पॉट ऊपर जाएगा, जैसे जैसे मान के चले ब्लैक स्पॉट यहाँ पर आ गया, तो इसका ग्रीन स्पॉट जो है ना, इसका प्रोजेक्शन जो बोलते हैं, ये भी ऊपर जा रहा है बेसिकली। थोड़ी देर के बाद ब्लैक स्पॉट यहाँ पर कहीं पर आ गया, ठीक है ना, तो ग्रीन स्पॉट भी यहाँ पर कहीं पर आ गया, ठीक है ना, तो वैसे फिर और यहाँ पर ऊपर चले गया,
तो ये वाला ग्रीन पॉइंट फिर और थोड़ा ऊपर आ गया, इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट। अब ये दोनों मान के चलो कोइंसाइड हो रहा है यहाँ पर भी ब्लैक पॉइंट है और इसके साथ ग्रीन पॉइंट भी इसके साथ ही है, बेसिकली दोनों कोइंसाइड हो रहा है। तो देखो जब इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, when it is in the first quadrant, if you see it very carefully, the particle is moving from origin to upward, ये हो गया arrow mark in the upward direction। तो ये जो ग्रीन पॉइंट है ना, ऑरिजिन से होते हुए ऊपर चले गया। फिर वैसे ब्लैक पॉइंट जब नीचे आ रहा है, बेसिकली यहाँ पर अगर ब्लैक पॉइंट है तो इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट में यहाँ पर अपने को ग्रीन पॉइंट बन रहा है। फिर ब्लैक पॉइंट यहाँ पर कहीं पर आ गया पार्टिकल, तो इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट में यानी इसका प्रोजेक्शन जो है ना, यहाँ पर ग्रीन पॉइंट है। फिर यहाँ पर जब ब्लैक पॉइंट यहाँ पर आ गया वापस, तो उसका ग्रीन पॉइंट जो है ना वापस फिर अपने ओरिजिन पे आ गया। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में है, द पार्टिकल इज कमिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पार्टिकल ऊपर, सेकंड क्वाड्रेंट में नीचे। इस पोजीशन को हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, ठीक है ना। और इस सेंटर वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं अपन, मीन पोजीशन, ठीक है ना। When the particle is again थर्ड क्वाड्रेंट में, अब यहाँ पर आ गए मान के चलो पार्टिकल, तो उसका जो प्रोजेक्शन रहेगा यहाँ पर आ गया, फिर ब्लैक वाला पॉइंट पार्टिकल जब यहाँ पर आया तो उसका प्रोजेक्शन जो है ना बेसिकली यहाँ पर कहीं पर आ गया बेसिकली, फिर उसके बाद ये यहाँ पर आ गया तो ग्रीन पॉइंट भी वहीं पर आ गया। When it is in the third quadrant, तो पार्टिकल क्या हुआ, पार्टिकल इज बीन कमिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऐसा। तो अब अपने को वेरी क्लियरली मालूम हो रहा है कि when the particle is moving in the uniform circular motion, तो वो पार्टिकल SHM नहीं बना रहा है, एक ग्रीन पॉइंट जो बना रहा है ना, दैट इज मेकिंग टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द फिक्स पॉइंट। जब पार्टिकल फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में ऊपर जा रहा है तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन एग्जैक्टली ऑपोजिट यहाँ पर कहीं पर होगा, isn't it? Then when the particle is right now somewhere here, यहाँ पर आ गया ब्लैक पॉइंट, तो उसका प्रोजेक्शन एग्जैक्टली यहाँ पर कहीं पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वैसा क्या होता है, पार्टिकल का जो मोशन है ना ऊपर जा रहा है। तो ये अबाउट मीन पोजीशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब था तो ऊपर जा रहा था, सेकंड क्वाड्रेंट में नीचे आ गया, फिर वापस अपने मीन पोजीशन पे। फिर जब पार्टिकल इज इन द थर्ड कोऑर्डिनेट, द पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम द मीन टू एक्सट्रीम इन द डाउनवर्ड। जो इट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, द पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम द एक्सट्रीम टू द मीन पोजीशन, सो इट इज मेकिंग टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजीशन। यानी अगर ये मीन पोजीशन है तो पहले ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, सो ये ऑसिलेशन करते जाएगा। इस वाले मोशन को अपन क्या बोलते हैं, SH। तो अब स्टेटमेंट पढ़िए, कंसीडर ए बॉडी इज रिवॉल्विंग इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, देन इट्स प्रोजेक्शन मूव्स अलोंग व्हाट बेटा, SHM, that is nothing but along your diameter, ठीक है। then the projection of the particle along the diameter will give me your SHM। यहाँ तक क्लियर है सभी को, चल यहाँ पर लिख लीजिए नेक्स्ट वन, लेट y be the displacement of projection, कहीं पर भी y be the displacement of projection। डायग्राम देख लीजिए एक बार, t is equal to t सेकेंड्स के पास ये प्रोजेक्शन पार्टिकल यहाँ पर आ गया। इस पार्टिकल का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है आपको, isn't it? ये जो वाला वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसको x से भी रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, डिपेंड करता है आपको अपने अपना ऑसिलेशन में क्या लेगा। So let y be what बेटा, displacement of what, projection after t seconds, after t seconds। then from figure, trigonometry लगा जी, from figure I can write sin theta is equals to y divided by radius। Radius is represented by a, maximum displacement is known as amplitude, so sin theta कितना बन गया बेटा, y by a, isn't it? So what is a here beta, a is nothing but radius of circuit, a is nothing but radius of circuit, maximum displacement is known as amplitude। a को क्या बोलते हैं अपन, amplitude बोलते हैं, a is known as amplitude, ठीक है ना। उसका डेफिनेशन में लिखाऊंगा फिर। सो यहाँ पर अभी y की वैल्यू क्या हो गई बेटा, y is equals to a into sin of your theta बन गए, ठीक है ना। इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लूं, y is equals to a into sin theta की वैल्यू क्या है, ओमेगा into t, तो y is equals to your a into sin omega into t। क्लियर बेटा, y is equals to your a into sin omega into t।
sin theta is equals to y by a, or y is equals to a into sin theta, or y is equals to a into sin of your omega into t. इस y को क्या बोलते हैं अपन बेटा? This y is known as what? This y is known as displacement of the projection. After how much time beta? T seconds. Displacement of particle after t seconds. ठीक है ना? Is it clear? डिस्प्लेसमेंट आ गया, y is equals to a into sin of your omega t. अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है बेटा इसमें से, आपको काइनेमेटिक्स आता ही है, वेलोसिटी निकालना है, रिप्रेजेंटेड लेटर v. तो v is equals to क्या लिखेंगे हम लोग? dy by dt. डिफरेंशिएट द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, यानी v is equals to your डिफरेंशिएशन ऑफ y की वैल्यू डाल दीजिए a into sin omega into t डिवाइडेड by dt. इसमें ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकाल लीजिए, ये बन जाएगा v is equals to your a into डिफरेंशिएशन ऑफ योर साइन ओमेगा t डिवाइडेड बाय dt कर दीजिए. डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा t क्या होता है बेटा? चेन रूल है. v is equals to ये एज इट इज है, इसमें से ओमेगा बाहर निकाल लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ योर साइन विल बी इक्वल टू how much बेटा? cos. तो ये हो गया cos ऑफ ओमेगा t. ठीक है ना? तो v is equals to कितना बना? v is equals to your a omega into cos of your omega into t. This is the velocity of the particle. So velocity of the particle कितना हो गया? v is equal to a into your omega into your a omega cos omega t. इसको अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें, I can even write like this. v is equals to a omega cos omega t कैसे लिख सकता हूँ बेटा? कोई बताएगा? We know the formula sin square theta plus cos square theta is equals to 1. तो cos square theta will be equal to 1 minus sin square theta. तो cos theta will be equal to under root of your 1 minus sin square theta. But sin theta की वैल्यू कितना है? As sin theta is equals to y by your a, I can write cos theta is equals to under root of your 1 minus y by a का whole square. ठीक है ना? तो थीटा की वैल्यू क्या है बेटा? ओमेगा टी. तो ये हो गया cos ओमेगा टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर. तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ना, cos ऑफ योर cos ओमेगा टी के जगह क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट ऑफ योर 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर. सो दिस इज द वेलोसिटी. v is equals to your a omega अंडर रूट ऑफ योर 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर. यानी अगर a को मैं बाहर निकाल के सिंप्लीफाई कर दूं, आई कैन राइट दिस वन एज v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ये हो गया वेलोसिटी. ठीक है ना बेटा? सो आई कैन से दैट this velocity is the function of what? Displacement. This velocity is the function of your time. Clear है? v is equals to a omega under root of your omega under root of your a square minus y square. This is your velocity of the particle. आई बात समझ में सभी को? एक बार देख लीजिए बेटा, किसी को डाउट रहा है तो प्लीज लेट मी नो. डायग्राम में से पहले मैंने साइन थीटा की वैल्यू निकाली है. साइन थीटा तो निकालने आता है ना बेसिकली. ये वाला डायग्राम था, ये एम्पलीट्यूड था, ये वाई था, ये थीटा था. ये वाले ये भी वही होगा ना बेटा. ऐसा अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ पर, तो दिस वन इज वाई, दिस वन इज ए. सो साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई ए, वाई इज इक्वल टू ए इनटू साइन थीटा. थीटा की वैल्यू क्या होती है? मैंने बोला था थीटा की वैल्यू होती है ओमेगा इनटू टी. मैंने वो लिख दिया. तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल का इक्वेशन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन. एट एनी टाइम अगर पूछा है तो y इज इक्वल टू a इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी. अगर वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी को क्या करिए आप? डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. तो वेलोसिटी निकल जाएगा v इज इक्वल्स टू मतलब क्या? dy बाय योर dt. तो मैंने उसको डाल दिया, सिंप्लीफाई कर लिया. तो आई गॉट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू a ओमेगा cos ओमेगा t और v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. यहां तक क्लियर है सभी को? any problem to anyone? आया बेटा सभी को यहां तक?
देख लीजिए एवरीवन। एक्सेलरेशन वगैरह कल के क्लास में कर लेंगे। थोड़ा ऑसिलेशन सब रिवीजन कर लीजिए, वैसे भी रिकॉर्डिंग में भी है, आप एक बार देख सकते हैं बेसिकली। ठीक है, चलो टेक केयर बेटा, बाय। किसी को कुछ बात करना है क्या जूनियर्स में? ओके चलो टेक केयर, बाय।